जैसे ही आप प्रेस करते हैं एंटर, तो सबसे पहले कंप्यूटर अपनी लोकल कैश में ट्राई हैकमी को फाइंड करता है। वी हैव टू सिलेक्ट टेक्स्ट हेयर एंड लेट्स सेंड दिस रिक्वेस्ट। So hello everyone, here we go again with our new video. As you all know that we are going to cover our cybersecurity learning roadmap, and in the first series we are on our pre-security. Those who are following these videos knows that we already done our first module, that is introduction to cybersecurity, and the second module, that is network fundamentals, and we are going to cover our third module, which is how the web works. And for those who made it so far, a big round of applause for those. And let's continue to our learning. Today we are going to cover how the web works module. The first chapter is DNS in details. So this room is not a premium room. You can follow along with me as we are going through this room. So the first task is, what is DNS? Domain Name System. DNS stands for Domain Name System. Provides a simple way for us to communicate with devices on the internet without remembering complex numbers. Much like every house has a unique address for sending mail directly to it, every computer on the internet has its unique address to communicate with it, called an IP address. An IP address looks like the following: 104.26.10.229. Four sets of digits ranging from 0 to 2 to 5, separated by a period. When you want to visit a website, it's not exactly convenient to remember this complicated set of numbers, and that's where DNS can help. So instead of remembering this IP address, you can remember directly the domain name, which is tryhackme.com. सो डीएनएस जो होता है हमारा, वो आईपी एड्रेस को ऐसे जो वेबसाइट नेम्स होते हैं उनके उनके साथ रिजॉल्व करता है। तो आपको मान लीजिए ट्राई हैकमी का अगर ये आईपी है, तो आपको ये आईपी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ tryhackme.com याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है याद रखने के लिए, और ये सब होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम की वजह से। सो लेट्स आंसर द क्वेश्चन, व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर? दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। Now let's go to our task 2, that is domain hierarchy. Domain hierarchy. So we have three levels: root domain, top level domain, second level domain. So you can see these are our uh, top level domains, and these are second level domains. And here we have root domain. Let's see what are those individually. TLD, that means top level domain. A TLD is the most right hand part of a domain name. So, for example, the TryHackMe TLD is .com. So, if you see TryHackMe, इसकी जो top level domain है वो .com है. There are two types of TLD: GTLD, generic top level, and CCTLD, country code top level domain. Historically, a GTLD was meant to tell the user the domain name's purpose. For example, a .com would be for commercial purposes, and .org for an organization, and .edu for education, and .gov for government. And a CCTLD was used for geographical purposes. For example, .ca for sites based in Canada, .co.uk for sites based in the United Kingdom, and so on. Due to such demand, there is a influx of new GTLDs ranging from .online, .club, .website, .biz, and so many more. For a full list of over 2000 TLDs, click here. So let me click here and see. So these are some of the TLDs you can see in the text format.
There is a lot of TLDs you can see. Now let's go back. Second level domain. Taking tryhackme.com as an example. The .com part is the TLD and tryhackme is the secondary level domain. When registering a domain name, the second level domain is limited to 63 characters plus the TLD and can only use A to Z 0 to 9 and hyphens. Cannot start or end with hyphens or have consecutive hyphens. Subdomain. A subdomain sits on the left hand side of the second level domain using a period to separate it. For example, in the name admin.tryhackme.com, the admin part is the subdomain. A subdomain name that has the same creation restrictions as a second level domain, being limited to 63 characters and can only use A to Z and 0 to 9 and hyphens. Can't start or end with hyphens or have consecutive hyphens. You can use multiple subdomains split with periods to create longer names such as jupiter.servers.tryhackme.com, but the length must be kept to 253 characters or less. There is no limit to the number of domains you can create for your domain name. Now let's answer the questions. What is the maximum length of a subdomain? That is 63. Which of the following characters cannot be used in a subdomain? That will be underscores. You can use hyphens but not consecutive hyphens, but you can't use underscores. What is the maximum length of a domain name? That is 253 maybe, or 253. Yes, 253. That is 253. What type of TLD is .co or .uk? That is CCTLD, country code top level domain. Now let's go to our task 3, that is record types or record types. DNS record types. DNS isn't just for websites though, and multiple types of domain record exist. We will go over some of the most common ones that you are likely to come across. A record. So what is a record? Type these records resolve to IPv4 addresses. For example, this IP address. Quad A record. These records resolves the IPv6 addresses. For example, this. So if you see this type of IP address, that is a IPv4 address. And if you see this type of address, then you can quickly understand that this is IPv6 addresses. CNAME record. These records resolve to another domain name. For example, TryHackMe's online shop has the subdomain name store.tryhackme.com, which returns a CNAME record, shops.shopify.com. Another DNS request would then be made to shops.shopify.com to work out the IP address. MX record. These records resolve to the address of the servers that handle the email for the domain you are querying. For example, an MX record response for tryhackme.com would look something like atl1.apxmx.l.google.com. These records also come with a priority flag. This tells the client in which order to try the servers. This is perfect for if the main server goes down and email needs to be sent to a backup server. TXT record. Text records are free text fields where any text based data can be stored. Text records have multiple uses, but some common ones can be to list servers that have the authority to send an email on behalf of the domain. This can help in the battle against spam and spoofed email. They can also be used to verify ownership of the domain name when signing up for third party services. Here are some few examples. So, these are some of the examples of text record.
As you can see, as the name implies, text record are strings of text. Now let's answer the questions. What type of record would be used to advise where to send email? That is MX. What type of record handles IPv6 IP addresses? That is quad A record. Now let's hop on to our next task, that is task 4, making a request. What happens when you make a DNS request? Now, here we have an interesting part that you are going to know what happens when you type on your browser's search bar google.com or anything.com, any website that you want to go. So, you will learn what happens when you click enter or when you press enter. Now, let's see. When you request a domain name, your computer first checks its local cache to see if you have previously looked up the address recently. If not, a request to your recursive DNS server will be made. So क्या होता है कि जब आप सबसे पहले मान लीजिए google.com सर्च करते हो तो सबसे पहले क्या होता है आपका कंप्यूटर जो है वो चेक करता है अपनी लोकल कैश में कि आप उस वेबसाइट को रिसेंटली आपने विजिट किया है या नहीं। अगर आपने नहीं किया होता तो वही रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाती है आपके रिकर्सिव डीएनएस सर्वर के ऊपर। नाउ लेट्स सी व्हाट ए रिकर्सिव डीएनएस सर्वर डू। A recursive DNS server is usually provided by your ISP, that is Internet Service Provider, but you can also choose your own. This server also has a local cache of recently looked up domain names. If a result is found locally, this is sent back to your computer and your request ends here. This is common for popular and heavily requested services such as Google, Facebook, Twitter. If the request cannot be found locally, a journey begins to find the correct answer, starting with the internet's root DNS servers. तो क्या होता है कि अगर वो चीज़ हमारे डीएनएस सर्वर में मिल जाती है, तो वो हमें प्रोवाइड की जाती है, जो भी हमने सर्च किया है हमारे आईएसपी के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे भी एक लोकल कैश होती है। अगर वहाँ पर भी वो नहीं मिलता है, तो जो रिक्वेस्ट है, वो जाती है इंटरनेट रूट डीएनएस सर्वर्स के पास। अभी हम इस चीज़ को इस डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, पर लेट्स रीड फर्स्ट। द रूट सर्वर्स एक्ट एज द डीएनएस बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। Their job is to redirect you to correct top level domain server depending on your request. If, for example, you request tryhackme.com, the root server will recognize the top level domain of .com and refer you to the correct TLD server that deals with .com addresses. तो क्या होता है कि जो रूट सर्वर होते हैं वो हमारे डीएनएस बैकबोन की तरह एक इंटरनेट के अंदर काम करते हैं और उनकी जॉब क्या होती है कि हमें रीडायरेक्ट करना है करेक्ट टॉप लेवल डोमेन सर्वर के ऊपर जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी। जैसे कि अगर आप tryhackme.com सर्च करते हो तो जो रूट सर्वर है वो रिकॉग्नाइज करता है टॉप लेवल डोमेन दैट इज .com, जो कि इसके पीछे यहाँ पर लगा हुआ है .com, दैट इज TLD टॉप लेवल डोमेन, और वो हमें .com जो TLD सर्वर है वहाँ पर रिक्वेस्ट को करेक्टली रेफर करता है। नाउ लेट्स गो फर्दर। The TLD server holds records for where to find the authoritative server to answer the DNS request. The authoritative server is often also known as the name server for the domain. For example, the name server for tryhackme.com is kip.ns.cloudflare.com and uma.ns.cloudflare.com. You will often find multiple name servers for a domain name to act as a backup in case one goes down. An authoritative DNS server is the server that is responsible for storing the DNS records for a particular domain name and where any updates to your domain name DNS records would be made. Depending on the record type, the DNS record is then sent back to the recursive DNS server, where a local copy will be cached for future request and then replayed back to the original client that made the request. DNS records all come with TTL, time to value.
This value is a number represented in seconds that the response should be saved for locally until you have to look it up again. Caching saves on having to make a DNS request every time you communicate with a server. तो अब हम इसे समझते हैं। तो मान लीजिए अगर आप अपने कंप्यूटर से tryhackme.com सर्च करते हैं तो क्या होता है। जैसे ही आप प्रेस करते हैं एंटर, तो सबसे पहले कंप्यूटर अपनी लोकल कैश में ट्राईहैकमी को फाइंड करता है। जैसे कि आपने यहाँ पर भी देखा था कि सबसे पहले वो अपनी लोकल कैश में उस डोमेन नेम को सर्च करता है। अगर वो वहाँ पर मिल जाता है तो वहीं से रिक्वेस्ट जो हमारी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर वो वहाँ पर नहीं मिलता तो रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड करी जाती है रिकर्सिव डीएनएस सर्वर के पास। जो हमारा रिकर्सिव डीएनएस सर्वर है वो यूजुअली प्रोवाइडेड होता है हमारे आईएसपी के थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमारा रिकर्सिव डीएनएस सर्वर है वो प्रोवाइड किया जाता है हमारे आईएसपी से। मतलब मेरा जो रिकर्सिव डीएनएस सर्वर है वो एयरटेल के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। ये हम चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन विच आईएसपी यू हैव। सो जब रिक्वेस्ट डीएनएस के पास जाती है, इसकी भी एक रिकर्सिव डीएनएस सर्वर की भी एक लोकल कैश होती है। वो वहाँ पर चेक करता है कि अगर वो डोमेन उसे वहाँ मिलती है तो वो हमें रिज़ल्ट वापस फॉरवर्ड करता है। लेकिन अगर वो नहीं वहाँ पर मिलता तो क्या होता है, रिक्वेस्ट और आगे जाती है हमारे रूट डीएनएस सर्वर्स के पास। लेकिन जो हमारा आईएसपी है उसके पास गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाने वाली वेबसाइट्स होती है वो उसके पास रहता ही है रिकॉर्ड। लेकिन अगर वहाँ पर मान लीजिए हमने गूगल तो नहीं किया सर्च, ना फेसबुक किया, हमने किया ट्राईहैकमी, और ट्राईहैकमी रिकर्सिव डीएनएस सर्वर के पास नहीं था, तो रिक्वेस्ट हमारी फर्दर जाएगी रूट डीएनएस सर्वर के पास। तो रूट डीएनएस सर्वर का क्या काम होता है कि हमें करेक्ट टॉप लेवल डोमेन प्रोवाइड करना। और जो रूट डीएनएस सर्वर है ये हमारा बैकबोन भी बोलते हैं इंटरनेट की। तो मान लीजिए अगर आपने tryhackme.com सर्च किया तो रूट डीएनएस सर्वर रिकॉग्नाइज करेगा टॉप लेवल डोमेन दैट इज डॉट कॉम। ये जो लास्ट में डॉट कॉम है टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद वो सही टीएलडी के पास जो रिक्वेस्ट है उसे फॉरवर्ड करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हमने डॉट कॉम सर्च किया है और आप डॉट edu के ऊपर चल जाएं। तो रूट डीएनएस सर्वर का जो काम है हमें करेक्ट टॉप लेवल डोमेन प्रोवाइड करना। उसके बाद क्या होता है, जो टीएलडी है उसके अंदर भी रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे। तो टीएलडी सर्वर होल्ड्स रिकॉर्ड्स फॉर वेयर टू फाइंड ऑथोरिटेटिव सर्वर। उसके बाद हमें ऑथोरिटेटिव सर्वर को फाइंड करना होता है जो कि टीएलडी के पास उसका रिकॉर्ड होल्ड होता है, जैसे कि डॉट कॉम। तो जो डॉट कॉम है वो अब आगे जाएगा ऑथोरिटेटिव सर्वर को फाइंड करने के लिए। तो ऑथोरिटेटिव सर्वर क्या करेगा, उसे हम नेम सर्वर भी बोलते हैं। वो देखेगा रिक्वेस्ट डॉट कॉम है, तो इसका मतलब वो आगे जो नेम सर्वर जो जो अथॉरिटेटिव जो हमारा सर्वर होता है उसके अंदर नेम सर्वर्स होते हैं, जैसे कि ये है cloudflare.com एंड this.com। ताकि अब ये आप मल्टीपल हो सकते हैं कि अगर कोई एक डाउन होता है तो जो दूसरा है एज ए बैकअप यूज़ होता है। उसके बाद फर्दर क्या होता है हमारे पास, अथॉरिटेटिव सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डीएनएस रिकॉर्ड्स। तो जितने भी डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं वो अथॉरिटेटिव सर्वर के अंदर होते हैं। मान लीजिए आपको ना यहाँ मिला, रिकर्सिव डीएनएस सर्वर पे भी नहीं मिला, रूट डोमेन सर्वर पे भी नहीं मिला, तो जो अथॉरिटेटिव सर्वर है इसके अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे जो डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो इसका जो मेन काम है वो डीएनएस रिकॉर्ड्स को स्टोर करने का है। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारी पर्टिकुलर डोमेन नेम होती है, अगर मान लीजिए आपने tryhackme.com को tryhackme.com की जगह tryhacku.com कर दिया, तो वो भी सारे के सारे चेंजेस यहीं पर मेड किए जाते हैं। मतलब वो सारे चेंजेस इसी के अंदर होते हैं। और इस वाले सर्वर के ऊपर क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द रिकॉर्ड टाइप द डीएनएस रिकॉर्ड इज देन सेंट बैक टू द सर्वर। तो कहीं पर भी नहीं मिला तो जो अथॉरिटेटिव सर्वर है यहाँ पर तो वो चीज़ मिलती ही मिलती है, जो कि हमें
वापस भेजती है रिक्वेस्ट, जो कि कहाँ भेजती है, रिकर्सिव डीएनएस सर्वर के पास। उसके बाद जो रिकर्सिव डीएनएस सर्वर है, जो ये वाला रिकर्सिव डीएनएस सर्वर है, ये उसकी एक लोकल कैश बना लेता है, ताकि मान लीजिए आपने फिर से विजिट करना हो उस वेबसाइट को, मान लीजिए ट्राई हैकमी को आपने फिर से विजिट करना हो, तो उसके कैश में वो थोड़े टाइम के लिए सेव हो जाती है। तो वो कितने टाइम के लिए सेव होती है, वो डिसाइड करता है TTL, दैट इज़ टाइम टू लीव। मतलब उस रिकॉर्ड का डीएनएस सर्वर के अंदर, रिकर्सिव डीएनएस सर्वर के अंदर कितना टाइम टू लिव है। जैसे ही वो टाइम टू लिव ख़त्म होता है, उसके बाद वो वहाँ से चीज़ हट जाती है और कैश हमारी जो होती है वो खाली हो जाती है। तो यहाँ पे रिकर्सिव डीएनएस सर्वर के अंदर जो कैशिंग होती है, उससे हमें एक बेनिफिट रहता है कि मान लीजिए आपने 1 घंटे के बाद मान लीजिए फिर से आपने tryhackme.com सर्च किया, तो वो आपको यहीं मिल जाएगा और आपका जो यहाँ तक सर्च का जो टाइम है, वो वेस्ट नहीं होगा। सो कैशिंग it plays a very important role in this. Now answer the questions. What field specifies how long a DNS record be cached for? That is time to live, TTL. What type of DNS server is usually provided by your ISP? That is recursive. जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए, जो हमारा DNS recursive DNS है, is usually provided by your ISP. What type of server holds all the records for a domain? That is authoritative server. Mic check. Now let's go to our fun part, which is practical part, and this part we love the most. So let's click on the view site button and see what's inside. Let's first read what we are going to do in this task. Using the website on the right, we can build requests to make DNS queries and view the results. The website will also show you the command you would need to run on your own computer if you wish to make the request yourself. So these are some of the questions that we have to answer after completing the practical. So let's get into it. तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? I think we have to read the questions to answer it, and that is obvious. So, what is the CNAME of shop.website.thm? So let's select CNAME here and shop.website.thm. Let's send the DNS request by clicking on this button. So, non-authoritative server. The canonical name is shops.myshopify.com. CNAME को हम canonical name भी बोलते हैं. What is the value of the text record of website.thm? Now we have to select text here and website.thm. Website.thm. Let's send this request. So this is the value of the text record, and you can see we are getting flags here, and we are actually TryHackMe is preparing us for finding the flags in our upcoming tasks, where we can where we will hack the websites, the gamified websites, and find the flags inside the machines. What is the numerical priority value for the MX record? Is the numerical priority value MX record के लिए क्या होगी? Let's send the request, and that is 30. What is the IP address for the A record of www.website.thm? So now let's select A here and
I think this will populate automatically. No, it's not. Let's wait. www dot, maybe it will populate now. Yes, it will. We have to remove one dot here, and let's send the request. And this is the IP that we need to put here in order to answer this question. And as you can see that we have successfully completed our first chapter in the third module, that is how web works. Now let's, that is, we are unstoppable. And let's go further. You can share this achievement in LinkedIn, WhatsApp, Telegram, wherever you want. I don't want to share that because I have already shared that achievement. Let's go back to our dashboard. So what's upcoming? That is HTTP in details. We will see how hypertext transfer protocol work in detail. So for that to come, we need to wait for it. We need to wait for our next video. And I hope you like this video. And if you really enjoyed the practical and the learning stuff, how DNS works, you can give a like to this video, and that will help me a lot. And now we will meet in our next video. So bye bye and stay safe.